एक इंटरेस्टिंग एंगल ओपन हो रहा है ये डील कंफर्म होने के साथ साथ, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था. जस्ट लाइक यू मेंशन, राइट, देयर वर plenty other clubs who are aiming for this striker, right? Right. And having known the fact that now Liverpool has confirmed the striker, where does the other clubs go? Because this guy was like a straight out and out first choice. जैसा आपने बोला, न्यूकासल शायद एकेटिके के पीछे जा रहा था. Maybe there was one condition that they were probably thinking of leaving Isak. But if Isak stays there for Newcastle, we never know. He might or he might not. तो हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. But now since he's gone there and Isak somewhat predominantly might stay in Newcastle, शायद chances थोड़ा और बढ़ जाता है. Because I मतलब don't there know was a who else would Saudi be. link which came, लेकिन I don't think that's really something Now, which will happen because Ankit bhai, Newcastle themselves are straight interesting on. part is Chelsea क्या करेगी अब? You know the fact that we're not going after any of the victors. जितना भी हम रो ले चलना है आके यहाँ पे, we know the fact that one of the victors is not coming to Chelsea. Ekitike was one of the possible things, and we knew the fact that look, Joao Pedro has been tremendous this Club World Cup. जैसे ही आता है, what an impact he's made, right? And Delap also is looking very promising. Let's Right. have it straight. But we also know the fact that we might need one more. We just might need one more striker. हाँ, मतलब you So just compare ना, मतलब with all due respect to हमारा क्लब वर्ल्ड कप which हम तो सेलिब्रेट करेंगे 4 साल तक, लेकिन डेलाप एंड जाओ पेड्रो आई वुड नॉट से सेम, लेकिन सिमिलर इन अ सॉर्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड का लास्ट सीजन, ऑल्दो वो प्रीमियर लीग से नहीं थे, दो यंग स्ट्राइकर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट हॉयलैंड एंड ज़र्क्ज़ी, आप कंपेयर कर सकते हैं ना, correct. डेलाप एंड जाओ पेड्रो वैसे ही है, लेकिन आई Yes. जेन्युइनली बिलीव दे आर बेटर प्रीमियर लीग रेडी, लेकिन I think it all Yeah. boils down to Nicholas Jackson. ये मेरा है आज जवाब. Hmm. Short. Again, famously for people who watched Almighty Blues, जानते हैं भाई, मतलब गाली मीटर में quite high है निकोलस जैक्सन. लेकिन रियलिटी ये भी है कि वो एक होता है ना कहीं हमें पता है there is a spark in him as well. मतलब if Yeah. he gets the right manager at some point in his career, Hmm. वो उभर के आएगा. अब वो कहाँ आएगा पता नहीं. And that is where. So firstly, I don't want him going to a rival. If you really ask me, I know we Yeah. disagree there. हमने बात किया इस बारे में. Hmm. लेकिन at the same time, मतलब अगर वो जाता भी है, like you said, then probably and Nkunku links also are there, right? अगर that happens, because that's a fourth choice false nine kind of option, then all of a sudden भाई वही last season जैसे Neto and Tarek George और Palmer will be false nine, which we don't want. तो Yeah. there is an issue certainly, considering आप compare करो जो लिवरपूल का स्ट्राइक फोर्स है, जो मैन सिटी का स्ट्राइक फोर्स है, आर्सेनल का स्ट्राइक फोर्स होने वाला है, विक्टर ग्योकेरेस looks like it. तो I believe that we definitely need a third striker. Again, I like Mark Gu, लेकिन क्या मार्क ग्यू रेडी है अगर बाय चांस दो स्ट्राइकर्स लास्ट सीजन जैसे 2 महीने के लिए एब्सेंट है? इज ही रेडी टू काइंड ऑफ लीड द लाइन फॉर चेल्सी इन चैंपियंस लीग फॉर अ मंथ? नो, लेट्स बी रियल. ठीक है, तो ही डिजर्व्स अ लोन. ब्रोजा आई टाइम इज सेल हिम. तो वी नीड टू हैव दैट नेम. और वो एकिटिके, क्या वो जवाब था? आई थिंक प्रोबेबली अगर इंकुंकू जाता देन ही वुड हैव बीन अ क्लोजर आंसर, राइट? लेकिन जैक्सन अगर जाता है ना, देखो, पीपल make a lot out of it. I know Jackson and Nunes are two guys जो बहुत ही polarized views रखते हैं, ज्यादा hate than not, right? लेकिन reality ये भी है कि यार, especially Jackson, he has led the line for Chelsea Football Club for 2 full years. He has got मतलब कितने 35 goals and assists in about 65 starts in the Premier League. ठीक है, which is not the worst or not the best either, लेकिन for his price or age, I think it is still decent. But eye test is a thing. Answer is that we'll have to kind of convince one of Nkunku or Jackson to stay, honestly speaking. Right.